Welcome back to my YouTube channel, Programming with Pritam. This is Pritam Sinha here. This is video continuation of our beginner in-depth guide to HTML. This is our part 5 of video. आप जैसे कि टाइटल में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे how we can add graphics to our web pages. We will see the attributes, we will see its functionality, इसके advantage, disadvantages and many more. So without any delay हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. सो फर्स्ट पॉइंट्स जो हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं और पॉइंट्स फॉर डिस्कशन जो इस वीडियो में रहेंगे और जो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल the point that we'll be discussing will be like picking the right graphics, that is the file format, picking the right graphics file format. इसमें हम लोग सीखेंगे कौन सा फाइल फॉर्मेट बेस्ट रहेगा, वर्स्ट रहेगा. So we have to understand what is the graphics that will be necessary to insert into our web pages. Second will be our adding inline images to the document. How we can add images to our document. What is the necessary tag that हम लोग use करेंगे, कौन सा वाला tag हम लोग use करेंगे to add those images. And we will see some one example that how we can add those images into our other HTML tags as well. Okay. On the point number 3 में हम लोग देखेंगे the alt attribute and the align attribute. These are the attributes जो हम लोग use करेंगे in our image tag. Okay. And the fourth will be our giving the browser size scenes, or this is also one of the attribute we will discussing about, that is the height and the width. This may रहेगा scaling an image down and scaling an image up. What is the functionality and what's the difference between it? What is the error that might have and what are the errors it might occur, right? So on number 5 में हम लोग देखेंगे framing an image with a border. बॉर्डर हम लोग किसी इमेज को हम लोग एक बॉर्डर का अंदर रख सकते हैं. एंड क्रिएटिंग ग्राफिकल लिंक, आई थिंक ऑन part 3 of our video I have talked about hyperlinks, and in that video I have entered some graphical links in it. हम उसमें इमेज इंसर्ट करके डिस्क्राइब पर नहीं किया था उस वीडियो में, पर इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह के ग्राफिकल लिंक्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं. सो पॉइंट नंबर 6 में एज यूजुअल हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस. ये आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू. So the first thing is the picking the right graphics, that is the file format. So let's see what is the file format. Okay, let's change into a pointer. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, picking the right graphics file format. Let's understand. Okay, इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है GIF, JPG, JPEG, PNG, PCX, WMF, JFIF and so on. इसका मतलब कि we will find dozens of graphics file format that we can use to store images. तो images को हम स्टोर करने के लिए there are different file formats. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ओनली डिपेंड अपॉन इमेजेस. हम लोग अभी वीडियो में नहीं जा रहे, ग्राफिक्स में हम लोग देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स, राइट? So basically I'm considering only one graphic, that is images. That will be the other will be the same and I'll explain you in the future videos. Right, so images में रहेगा GIF, JPG, JPEG, PNG, PCX, WMF and JFIF and so on. इसके थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपना images to our web page. But we should understand that some browser does not accept some of the file format. So let's see. We should use file format that most browser understand. As I have mentioned, जिसके through the most popular are the file format that GIF, PNG, JPG and JPEG. The most popular file format that can be used are GIF, PNG, JPG and JPEG. आप लोग को रिमेंबर होना, आप लोग को मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लोग इमेज इंसर्ट कर रहे हैं वो हमेशा फाइल फॉर्मेट GIF में रहे या फिर PNG में या फिर JPG और JPEG. Okay, you have to remember this point. This is the main point because time complexity. It also matter time complexity. इसका मतलब है कि अगर इमेज को लोड होने में टाइम लगे, अगर वेब पेज को ओपन कर रहे हैं तो उस इमेज को लोड होने में टाइम लग रहा है तो अपना वेब पेज इज नॉट गुड. ओके, इंप्रेशन नहीं बनता है. अगर वो इमेज डायरेक्टली लोड हो जाए with a sufficient amount of data, then that we can call it is a good web page, right? So let's understand now. When choosing a graphics file format, the most important issue to keep in mind is the download speed versus image quality. You have to maintain the image quality, right? Image quality along with the download speed, right? इसमें आप लोग को इमेज का डाउनलोड स्पीड ध्यान में रखना चाहिए. अगर वो इमेज को डाउनलोड करे, वो यूज़र अपना उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए ट्राई करे
तो वो इमेज कैसे स्पीड में मतलब कि उसका डेटा कितना कंज्यूम होता है, तो बेसिकली डिपेंड ऑन द डाउनलोड स्पीड. So if you are going to use an image in your web page, you obviously want to store that image in a format that download as quickly as possible. आपको रिमेम्बर होना चाहिए ये इमेज जो आप इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू योर कीबोर्ड इन द वेब पेज, द फॉर्मेट शुड बी इन सच अ फॉर्मेट एज आई हैव टोल्ड जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, जेपीजी, एनी टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट दैट यू आर यूजिंग. आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए जो उसका साइज स्मॉल रहे, मतलब कि द साइज द फाइल फॉर्मेट फॉर द ग्राफिक मस्ट बी स्मॉल. सो इसका मतलब है कि ऑन द अदर हैंड यू ट्रेड इमेज क्वालिटी फॉर फास्टर डाउनलोड स्पीड. यस, आप लोग को अभी समझ आ गया होगा कि अगर इमेज क्वालिटी अगर इमेज का साइज कम हो, उसका क्वालिटी कम हो, तो उसका तो इमेज क्वालिटी भी डिक्रीज होगा, राइट. उसका मतलब कि साइज डेटा कंजम्पशन हाई होगा तो उसका इमेज क्वालिटी भी बेस्ट होगा, पर इसमें इमेज क्वालिटी लो होगा. तो बेसिकली वी विल काउंटर फिट दिस यूजिंग देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ attributes. In future I also talk how we can use how we can do download faster speed along with same image quality without any changing, without any using attribute, different kind of system that we can use. तो इन फ्यूचर हम लोग इसको देखेंगे. बस अभी के लिए हम लोग ये बिगिनर लेवल में जा रहे हैं, तो बेसिकली विल स्टार्ट जस्ट बेसिक, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन दी एडिंग इनलाइन इमेजेस टू योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. अभी हम लोग को कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं टू आर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट समझना चाहिए. तो कौन सा टैग हम लोग यूज कर रहे हैं, लेट्स सी. सो हम लोग यूज कर रहे हैं टू एड ग्राफिक, यू यूज एन एम्प्टी टैग कॉल्ड द इमेज टैग. ध्यान रखना ये इमेज टैग हम लोग यूज करेंगे जो होगा एक एम्प्टी टैग. ये एक कंटेनर टैग नहीं है, ये एक इमेज टैग है. अब मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो पे बताया था इमेज टैग और कंटेनर टैग में डिफरेंशिएशन. आप अगर कंसिडर करते हैं वो वीडियो देखने को, तो आप जरूर देखिएगा. उसमें पूरा तरह के पूरा एचटीएमएल बिगिनिंग का जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अप्लाई करेंगे उसका बेसिक सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो इसमें देखते हैं विच यू कैन इंसर्ट इन टू द बॉडी सेक्शन ऑफ योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज फॉलोज. आप लोग को योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज फॉलोज. आप लोग को ध्यान रखना है कि ये बॉडी सेक्शन का अंदर इमेज टैग आप लोग को रखना है. सो लेट्स सी. सो इमेज टैग यूज इज SRC. सो SRC का मतलब है सोर्स. सो देयर इज टू थिंग दैट वी कैन यूज, दैट इज image URL और you can use path / file name. आप लोग को ध्यान रखना ये और नहीं है, पार्ट और नहीं. ये स्लैश मतलब कि हम लोग जो और लिखना है ना, इंग्लिश में और लिखता है, बट बेसिकली दिस इज नॉट इंग्लिश, राइट. दिस इज कोडिंग. सो यहाँ पे मतलब कि ये स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, रिमेंबर. ओके, you can see here SRC accept the name of the file that you want to display. This is the source. Okay, आप लोग को ये source में ध्यान रखना है. So image URL is the absolute part or full URL you can say to the image. Okay, आप लोग को full URL मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग एक इमेज को एंटर कर रहे हैं थ्रू गूगल, आपका वो इमेज को अगर आप कॉपी इमेज एड्रेस करें तो वो उसका इमेज URL आप लोग फुल URL आप उसका कॉपी करके आप लोग रीयूज कर सकते हैं. बट बी श्योर दैट अगर आप लोग एक वेब पेज बना रहे हैं उसको कॉपीराइट फ्री बनाने के लिए, बिकॉज देयर आर वेरियस कॉपीराइट क्लेम, राइट. तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए. अगर आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो इफ़ यू वांट टू बी अ बेस्ट वेब डिज़ाइनर यू नीड टू मेंशन ऑल द इमेजेस, लाइसेंस कीज एंड मेनी अदर, राइट. अगर आप लोग इमेज URL यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग खुद का ग्राफिक्स क्रिएट करके पार्ट डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये थर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इस path/file name. So path/file name is the relative path for a local file or file in the current directory for the image. अभी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है एब्सोल्यूट पार्ट और रिलेटिव पार्ट में, आप पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आप लोग देख सकते हैं. मैंने उधर में बात किया है व्हाट इज URL रेफरेंस में दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस. सो इमेज URL स्टैंड्स इमेज URL जो हम लोग URL डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट मतलब कि लेके आते हैं वो होता है एब्सोल्यूट URL, एंड दिस इज द called relative URL, relative reference. Okay, now let's see our let's move to our editor. Let's understand how we can implement this image tag. Okay, so we have come to our editor. This is a VS Code editor. इसमें आप लोग देख सकते हैं HTML, ये basically HTML बेसिक HTML स्ट्रक्चर है. तो इस बॉडी के अंदर हम लोग दिया इमेज टैग, राइट. सो लेट्स सी फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे हम यूज़ किया. सो एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने यूज़ किया यूजिंग ओनली इमेज URL. ओके,
using only image URL. So आप image URL को देख सकते हैं, that is image source, that is image URL, that is http://cdn/pixabay.com. Okay, I have used pixabay.com. Okay, I'll show you how you can get this image URL. Okay, आप image पर click कीजिए. You can visit your any favorite web browser. You can open this page, suppose, and you can just copy this, copy image address, open your editor and paste inside this src. Remember, it should be inside double quotes. Okay, आप लोग को ध्यान रखना है कि ये डबल कोट्स का अंदर रहना चाहिए ये अपना इमेज का URL. ओके, आफ्टर सेविंग ये और सेकेंडरी relative reference. Okay, relative reference. So using part slash file name, image source equal to image slash image. Okay, follow link. Let's see इसका लिंक कहाँ आता है. ये देखिए, ये इमेज हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो आ रहा है. ये इमेज कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है डी यूट्यूब HTML कोड images slash image1.jpg. अब मैं इसका फाइल अब दिखाता हूँ. ये देखिए, आप ये पार्ट है ना, ये आप दिखाता हूँ कहाँ से लिखा है. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे HTML कोड के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, दैट इज इमेजेस. फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज इंसर्ट किया है. यू कैन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज. आप इसमें इसका फाइल फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं. मैंने कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ किया. आप लोग बेसिकली अगर आप लोग इमेज इंसर्ट करें तो बेसिकली इसका फाइल फॉर्मेट मेंटेन करना चाहिए और उसका नेम भी मेंटेन करना चाहिए. अगर आप इसको नेम डिफरेंट दें, सपोज आई हैव गिवन वन. ओके, I have given one and I have given here image one. So यहाँ पे वो image load नहीं होगा. So let's see if the image load or not. Let's open our output. Okay. Okay. You see, using the part file name, the image is not been uploaded. You see, the image is upload नहीं हो रहा है. Image को show नहीं कर रहा है. हम लोग को show करने के लिए उसका image का exact name रखना है और उसका file format रखना है. You can see. Okay. Okay, मैं change करता हूँ image name को. Okay, let's refresh it. You can see यहाँ पे यूजिंग पार्ट और फाइल नेम में ये इमेज आ रहा है. नाउ मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं अपना थर्ड पॉइंट में हम लोग बात किया था एडिंग ग्राफिक्स टू अदर HTML टैग्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज SRC में हम लोग इमेजेस स्लैश image2.jpg हम लोग यूज़ किया, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस यूज़ किया मैंने इधर. So it's time to start our adventure in the world of the web. So let's see the output for this also. Let me refresh it again. Okay, you see, first this is the using only image URL. This is the only image URL, remember, and this is using only part file name. This is the part file name. You see, this is the image that I have copied, right? You can see. Okay, I'll open it in a new. Okay, I'll open it a new. You can see http://cdnpixabay.com photo slash. This is the URL. This is the complete URL of this project. Okay, of this image. Sorry, of this image. Right. Now using this, then secondary is using part or file name. Let's see this one. Let's copy address of it. Copy image address. Let's see. अगर हम इसको copy image address करते हैं, you see, this is the part file the YouTube. This is the part name or file name that we have been copied, right? आप देख सकते हैं एंड यूजिंग दिस इज एडिंग ग्राफिक्स टू अदर HTML टैग्स. ओके, हम लोग अपना पैराग्राफ टैग में हम लोग ऐड किया था ग्राफिक्स को. आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग का अंदर हम लोग ऐड किया था ये इमेज को. सो सपोज अगर हम लोग इस इमेज को पैराग्राफ टैग को अगर अलाइन करें, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखा था पैराग्राफ टैग का अलाइन एट्रीब्यूट होता है जिसमें लेफ्ट, राइट, बॉटम, मिडल उसका एट्रीब्यूट देखा था अलाइन का. सो बेसिकली हम अभी इसको राइट देते हैं तो राइट होने से क्या होता है, इमेज भी मूव होता है या फिर बस टेक्स्ट मूव होता है. लेट्स सी दैट. रिफ्रेश इट. आप देख सकते हैं अलोंग विद इमेज ये कंटेक्स्ट भी चेंज हो रहा है विद इट टू मूव टू द राइट साइड. अगर हम इसको अलाइन में इसका एट्रीब्यूट अलाइन दे तो बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट एज यू नो. लेट्स कीप इट सेंटर. ठीक है, अब सेंटर पे ये इमेजेस और ये टेक्स्ट आ रहा है. कंसीडर नाउ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर next point, that is the alt attribute. The alt attribute, let's understand the alt attribute. Okay, what is alt attribute? The alt attribute for the image for the image tag is designed to accept tags that describe the graphic
in case of a particular browser can't display the graphic। इसका मतलब है कि अगर ये एक particular browser जैसे कि ओपेरा का प्रीवियस वेरियस वर्जन्स था, डिफरेंट वर्जन्स लाइक ओल्डर वर्जन, ओके सॉरी, ओल्डर वर्जन था जैसे कि GIF को सपोर्ट नहीं करता था। तो बेसिकली ऑल्ट टैब बेसिकली डिस्क्राइब करता है उस ग्राफिक को अगर वो इमेज को डिस्प्ले ना कर पाए। तो लेट्स सी द ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम ये है, इमेज सोर्स देन इमेज URL, यू कैन यूज रिलेटिव और एब्सोल्यूट, depend upon you, then all attributes। So इसका text description of the image, remember the text description of the image of the graphic, sorry। इसमें आप लोग को ऑल एट्रीब्यूट में आप लोग का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कि ग्राफिक्स का डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए कि मतलब कि ये बुक है या फिर ये इमेज क्या है। अगर आप लोग एक बुक का इमेज रख रहे हैं तो उसको में आप लोग लिखना चाहिए दिस एन इमेज ऑफ ए बुक। आप लोग को यूज़र को आगे से इन्फॉर्म करके रखना है कि अगर वो ब्राउज़र में लोड ना हो तो उसको डायरेक्टली ऑल एट्रीब्यूट से पता चल जाए ये एक ग्राफिक है जिसका ये इमेज ग्राफिक है, वो इसका बारे में एक बुक है, कार है, पेन है, depends right on the user, right? It depends on the website, right? So in simple term, the all attribute is used for those people whose browser can't display the graphics. The all attribute tells them that the graphic exists and explain what the graphic is about। अब देख सकते हैं all attribute tells them their graphics exist। ये tells them मतलब कि यूजर्स को बताता है कि ग्राफिक एग्जिस्ट करता है और इसका बारे में वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये कौन सा ग्राफिक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ये बुक का ग्राफिक हो सकता है, बर्ड का हो सकता है, पेन का हो सकता है, चेयर का हो सकता है, टेबल, डिफरेंट, राइट। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। तो लेट्स सी इन आवर कोड एडिटर, लेट्स मूव टू आवर एडिटर, ओके। Okay, this is the example of our all attribute example। You can see image। I have not given any image up here। मैं आपको source पे मैंने एक भी image नहीं दे रहा है। You can see I'll just remove all this for your convenience, okay। So all attribute में a picture of my latest downloaded image, right। So इसको हम लोग रन करके देखते हैं in our web browser, okay। Okay, you can see a picture of my latest downloaded image। You see ये अराइव हो रहा है क्योंकि हम लोग वो इमेज इंसर्ट ही नहीं किया, पर इमेज इंसर्ट ही नहीं किया, लोड नहीं हुआ। अगर सोचो बिकॉज दिस ए ब्रेव ब्राउजर इट विल सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग एनी ऑफ देम राइट नाउ। बिकॉज अगर हम इसको ऐड करें तो बेसिकली लेट्स सी इमेजेस स्लैश इमेज वन, अगर इमेज वन इसको दे तो रिफ्रेश करने से क्या आता है, ये देखिए इमेज तो आता है पर ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का ऑप्शन, ऑल्ट एट्रीब्यूट ए पिक्चर ऑफ डाउनलोडेड इमेज नहीं आ रहा है बिकॉज ये इमेज ट्रू है और ये फॉल्स है, अभी के लिए फॉल्स है। आप लोग समझिए ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू होगा, रिमेंबर इट गोस दिस वे, इट गोस वाइस वर्सा। अगर इस इमेज का सोर्स ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा और इमेज का फॉल्स ट्रू है, सोर्स फॉल्स रहेगा तो ऑल का ट्रू रहेगा। रिमेंबर दिस वे, ओके, रिमेंबर इन दिस मैनर। तो ऑल एट्रीब्यूट हम लोग को समझ आ चुका है ऑल एट्रीब्यूट क्या करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर दी अलाइन एट्रीब्यूट। सो बेसिकली इमेज टैग में हम लोग अलाइन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली डिसाइडेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइनमेंट दैट वी कैन यूज इन आवर image tag, that is top। the top usually assigns the tags with the top of the image। basically ये image को top और ये text को remember, अगर top हम लोग यूज करेंगे text को, not the image, okay, it's not the image, it's the text with the top of the image, it aligns the text। अगर हम लोग अभी हम लोग जैसे कि पैराग्राफ को इंसर्ट किया था इन आवर इमेज, वो बॉटम में रहा था, अगर हम उसको टॉप में करें तो यूजिंग टॉप अलाइनमेंट यू कैन यूज दैट, okay। We will see this in our practical session, okay। This is the middle, okay, this aligns the text with the middle of the image। The third one is the bottom, then align the text with the bottom of the image। and the left that is display image। यहाँ पे image को ध्यान रखना, left and right it depends on the image। left and right tells about the image, top, middle and bottom it tells about the text। remember this point। the align attribute it works on first of all the three top, that is top,
मिडल बॉटम काम करता है अपना टेक्स्ट पे और लेफ्ट एंड राइट काम करता है अपना इमेज पे। आप देख सकते हैं लेफ्ट पे देखिए डिस्प्ले इमेजेस ऑन द लेफ्ट साइड एंड सराउंडिंग कंटेंट फ्लोज अराउंड द इमेज। आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले इमेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सराउंडिंग कंटेंट फ्लोज अराउंड द इमेज। समझ रहे हो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये इमेज को डिस्प्ले करेगा ऑन द लेफ्ट साइड और जो भी उसका कंटेंट रहेगा, जो भी आप लोग टेक्स्ट एंटर करेंगे वो उसका लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब कि उसके स्टार्टिंग, मतलब इमेज जो स्टार्ट होगा, अगर इमेज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इमेज का नेक्स्ट स्टार्ट वही रहेगा। ओके, then right, okay, let's see on right, display image on the right side of the window and surrounding content flows around the image। okay, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर रहेगा। सी दिस नोट, ओके, नोट इम्पोर्टेंट दिस, आप लोग को ये नोट पर इम्पोर्टेंस देके पढ़ना है कि बाय डिफॉल्ट द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज अलाइन विद द बॉटम ऑफ एन इनलाइन इमेज। ये आपको ध्यान रखना है कि द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज अलाइन विद द बॉटम ऑफ एन इनलाइन इमेज। इसका मतलब बॉटम का कोई काम नहीं है अलाइन एट्रीब्यूट में। bottom is no use, bottom is of no use, remember this, that because by default the texts that are aligned with the images always remain to the baseline, always remain to baseline. That's why I have mentioned up here is that by default the baseline of the text is aligned with the bottom of an inline image। ये आप लोग को रिमेंबर करना चाहिए कि हमेशा इमेज हम लोग जो इमेज का टेक्स्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमेशा बॉटम ऑफ द इमेज ऑफ द इनलाइन इमेज रहेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर बॉटम अलाइन एट्रीब्यूट यूज ना करें, इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो यूजफुल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, let's move to our code editor। okay, this is the program I have created। is the basic HTML structure। आप यहाँ पे देख सकते हैं image source, image one, then alt attribute as usual, then align top। यहाँ पे this text is aligned with the top of the image। the second one is align middle, that is this text is aligned with the middle of the image। the third one is the bottom। this is not necessary much, okay, I will just write it here, I'll just write it here, uh, not necessary, okay, this is not much necessary, okay, this is not necessary, bottom align attribute is not necessary at all, because I have already mentioned that by default it is on the baseline of the bottom of the inline image, right? so this tag is aligned the bottom of the image। we'll see the differentiation in our output। आप लोग को पहले मैं कोड एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग आउटपुट देख लीजिएगा। तो ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग का अंदर में इमेज सोर्स, इमेज 4, दिस इज द रिलेटिव पार्ट आई हैव गिवन, रिलेटिव रेफरेंस, देन ऑल्ट इमेज 4। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू दिखाएगा, इमेज 4 को दिखाएगा। मैंने आप लोग को जैसे बताया सिंपल टर्म में, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स होगा, जैसे कि दैट इज सिंपल, राइट? सो align left, then display the image on the left side and surrounding content flows around the image। then the sixth one will be like image fifth one here, sorry, the fifth one will be image alt image 5, that is align to the right। we'll be using alignment equal to right। so display image on the right side of the window and surrounding content flows around the image। so let's see our output। इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, that is 5.3, right? it was 5.3.html, yes। okay, you can see here, आप लोग इमेज, let me zoom in a bit more for better understanding। you can see, आप देख सकते हैं ये इमेज है, इमेज तो कांस्टेंट रह है, इमेज कांस्टेंट, पर उसका टेक्स्ट को हम लोग अगर टॉप में रखें तो क्या है, सो द टेक्स्ट इज अलाइंड विद टॉप, यू कैन सी, राइट? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉप टेक्स्ट टॉप में रह रहा है। अगर हम लोग मिडल में दे तो क्या आ रहा है, मिडल में दे रहा है तो इमेज का मिडल आ रहा है, देखो ठीक, इमेज का मिडल आ रहा है। और ये बॉटम देखिए, बॉटम का देखिए, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन लेफ्ट। ये अगर हम लोग बॉटम ना दे तो क्या होगा, लेट्स सी, अगर हम लोग बॉटम ना दे तो क्या होगा,
Okay, let's cancel this. Let's save this. Let's preview again. Our bottom, you can see bottom has no changes to it. You can see bottom has no changes to it. By default it is already in the bottom, so by using again default align attribute bottom, it's no use, it's no use. Okay, आप लोग ये no use है, not necessary आप लोग को. So basically यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड वाला वो कंटेंट्स को आप लोग लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं. ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. आई जस्ट मेक इट इन कमेंट सेक्शन. ये देखिए ये लेफ्ट साइड का डिस्प्ले है. देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल टैग पे अपना लेफ्ट साइड में दिया था, आप सकते हैं डिस्प्ले लेफ्ट इमेज, और जो भी इमेज उसका कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स साइड में दिखा है. यू सी डिस्प्ले इमेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सराउंडिंग कंटेंट फ्लोज अराउंड द इमेज, आप लोग देख सकते हैं राइट. ओके, नाउ लेट्स सी हम लोग इसके बाद कौन सा वाला था, इसका बाद ये वाला था राइट. इसको हम लोग अनडू करते हैं और लेट्स सी. ओके, इमेज राइट, इमेज सोर्स दैट इज अलाइन राइट. अगर हम लोग राइट में रखते हैं तो इमेज क्या होगा, इमेज को क्या होगा, टेक्स्ट को क्या होगा, हम लोग चलो देखते हैं इसको. लेट्स रिफ्रेश दिस. यू कैन सी इमेज जा रहा है राइट साइड एंड कंटेंट जा रहा है टू द राइट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आगे अभी हम लोग अभी आप लोग समझ के हो गए कि अगर हम लोग अलाइन इक्वल टू लेफ्ट रखें तो पहला इमेज आता है, बाद में उसका कंटेंट आता है, जो भी हम लोग लिखा है तो वो आता है. अगर हम लोग राइट लिखे तो पहला कंटेंट आता है, इसके बाद उसके बाद इमेज आता है. आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब कि जिसके उल्टा रहता है ना, उल्टा रहता है इसलिए. राइट, यू हैव अंडरस्टूड राइट. ओके, लेट्स सी दिस अगेन. आई शो यू डायरेक्टली अगेन. नाउ यू कैन सी this is the output right. Okay, I have made this one. You can see that आप लोग को समझ आ गया ना alt attribute क्या है. तो now let's move on to our next point that will be our giving the browser sizes. अभी हम लोग को इसका इमेज का रेजोल्यूशन कैसे डिक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, इसका बारे में हम अभी जानेंगे. तो बेसिकली लेट्स सी व्हाट्स द गिविंग द ब्राउजर साइजेस का मतलब क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस राइट. So, providing browser a size scene means that we explicitly state the height and width of the image within the image tag. This has two benefits that make this a must. वो फर्स्ट बेनिफिट है जो हम लोग इमेज, अगर हम लोग साइजिंग देते हैं इमेज को तो उसका दो बेनिफिट होता है. इसका द फर्स्ट हिंट इज इट हेल्प यूजर टू हु हैव डिसेबल इनलाइन इमेजेस. If a user has disabled inline images, then the sizing will cause the browser to display an empty box that is the same size as the image. ये और एट्रीब्यूट का जैसा काम करता है और ये एक एम्प्टी बॉक्स दिखाता है. जितने ही आप लोग उसको हाइट और विड्थ दिया है वो एक एम्प्टी बॉक्स में दिखाता है. मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. एंड नंबर 2 पॉइंट इज मेक्स द वेब पेज रेंडर फास्टर. हाँ देखिए, अगर आप इसको हाइट एंड विड्थ, अगर एक बिग ओके ह्यूज इमेज को आप अगर उसको विड्थ एंड हाइट उसको स्मॉल करें पर उसका रेजोल्यूशन सेम रहे तो पर वो रेंडर फास्ट होगा, मतलब कि वो लोडिंग में इतना ज़्यादा टाइम लेगा. सो अगर हम लोग साइज देते हैं तो इट बेसिकली ब्राउजर डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट फर्स्ट then display the image. If you provide sizings for your inline images, the browser can display the formatted HTML document while it finishes downloading the images. Thus, the user sees the web page faster. यहाँ पे वेब को जल्दी से जल्दी आप लोग को दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग ये साइजिंग यूज करते हैं. सो the one is like we use the image tag that is height width attribute to provide the sizing to the browser. We set the height attribute to exact height and the width attribute to the exact width in pixels. आप यहाँ पे पिक्सल्स रख सकते हैं या फिर परसेंटेज रख सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन यू. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग्स राइट इन हाउ यू कैन मेंटेन द हाइट एंड विड्थ, either be it pixel, micropixels, it depends upon you, right? And then you want to reserve for the image, right? So note, if the size you specify by using the height and width attribute isn't the same as the actual image size of the image as determined in your favorite graphic editor, the browser scale the images.
ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये इमेजेस सेम ना रहे, उसका रेजोल्यूशन सेम ना रहे, अगर उसको इंक्रीज करे डिक्रीज करे, तो द ब्राउजर स्केल द इमेज. So let's see this. Okay, now let's see those thing that is our scaling an image down. What is this mean? हम लोग को समझना चाहिए scaling an image down का meaning क्या है. So scaling an image down means that the actual image is larger than the space you reserve by for it. Okay, by using the height and width attributes. In this case, the browser shrinks the image so that it fits in the reserved space. इसका मतलब है कि अगर ये एक्चुअल इमेज इज लार्जर देन द स्पेस यू रिजर्व, अगर ये इमेज, ये स्केलिंग एन इमेज डाउन मीन एक्चुअल इमेज, जो एक्चुअल इमेज है, अगर सोचो वो 1920 है and is larger than the space you reserve for it by using height and width and attributes. In this case, the browser shrink the image so that it fit in the reserved space. जो आप लोग रिजर्व स्पेस मेंटेन कर रहे हैं ना, वो रिजर्व स्पेस को मेंटेन करने के लिए ये स्केलिंग डाउन एन इमेज ये ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली बाय हाइट एंड विड्थ से हम लोग कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चंस फॉर इट, व्हाट इज द okay, what is the issue with that course. Okay, specifying a height and width that is smaller than actual image height and width does not save any download time. Remember that. मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि डाउनलोड टाइम यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, कि डाउनलोड टाइम सेम रहेगा 1920. अगर उसको 720p रखेगा, उसका क्वालिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, क्वालिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी उसको साइज शॉर्ट कर रहा है, उसका पिक्सल्स शॉर्ट कर रहा है ना, मतलब स्मॉल कर रहा है. सो द ब्राउजर स्टिल डाउनलोड्स द एंटायर इमेज बिफोर इट स्केल्स इट टू फिट द रिजर्व एरिया. Okay, now scaling an image up, what does it mean? Though scaling the image up means the actual image is smaller than the space you reserve for it using the height and width attribute. In this case, the browser enlarges the image so that it fits in the image. अगर वो image small हो और पर वो reserve area large हो, तो वो क्या करेगा, जो हम लोग reserve area वो image को बड़ा करेगा. Let's see, let's directly move to our editor and understand them. Okay. Okay, this is 5.4. Okay, this is a giving the browser size since example. Okay, this is an example. You see this is an example. Okay, let's me make it more easier for you. Up here, that is images slash. Okay, this is the folder that I've been using, images slash. ये folder है और ये the image है, and this is the part. Sorry, this is the file name and this is the file format. Okay, this is the file format. That is the JPG. Let's see, is it JPG or not? Okay, one moment. Okay, properties. Yes, this is JPG. You can see here. This is JPG, right? JPG formatting, right? Okay, again. Now let's preview this. We have given the height that is 70%, width 70%. मैंने आपको बताया था कि आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, आप पिक्सल्स भी दे सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन यू. ओके, आप इधर में माइक्रो पिक्सल्स भी दे सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन द यूजर. आप लोग जैसे तरह के क्या बोलते हैं इसको, साइजिंग, डिफरेंट टाइप साइजिंग रहते हैं ना, पिक्सल, परसेंटेज, माइक्रो पिक्सल. इट डिपेंड अपॉन यू. ओके, हम लोग फ्यूचर्स में देखेंगे कैसे कि मोबाइल में कैसे पिक्सल्स रहते हैं, कंप्यूटर में कैसे पिक्सल, डिफरेंट और डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट पिक्सल रहता है, तो हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, राइट. सो नाउ लेट्स सी हियर. चलो हम लोग उसको देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं. दैट इज ओके, वन मोमेंट. दैट इज 5.4, राइट. Yes, 5.4. Okay, let's open 5.4. I'll just change this 5.3 to 5.4 and let's enter the code. Okay, 5.4. You see this, ये एक्चुअल इमेज नहीं, हाँ ये मतलब कि ये हाइट और विड्थ हम लोग मैनिपुलेट किया, तो इसका एक्चुअल इमेज हम लोग निकालता है. द एक्चुअल इमेज कंपैरिजन करता है एक बार. यू सी द कंपैरिजन, आप देख सकते हैं द कंपैरिजन हियर. हाइट विड्थ इसका चेंज हो रहा है, राइट. Now let's make it more clear if you don't understand it. Suppose I am giving the pixel, इसको height में अभी हम 50 पिक्सल 50% दे रहा है, इस width में हम इसको 100 width दे रहे हैं. Now let's see what will happen. You see it changes, right. So हम लोग अभी अपना डिफरेंट हाइट डिफरेंट विड्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं इमेज को. अब बाद में इसके नीचे में हम लोग टेक्स्ट दे सकते हैं, साइडवेज टेक्स्ट दे सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन यू. ओके, इट डिपेंड अपॉन द यूजर, राइट. Now moving on to the next point, that is our framing an image with a border. Okay, framing an image with a border. Now let us see what is framing an image with a border means. Okay,
You can see here. By default, the user browser display a border each around each inline image that you are using as an anchor. जो इमेज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसका बॉर्डर क्या है? बेसिकली उसका बॉर्डर होता है जीरो. ओके, देयर इज नो बॉर्डर. ओके, जीरो बाय डिफॉल्ट इट इज जीरो. सो यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर अ बॉर्डर एट अ वाइट स्पेस अराउंड द इमेज. आप बॉर्डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं. सो बॉर्डर रेंज होता है फ्रॉम 1 to 13 to 15. Okay, it depend upon various browsers. Okay, so I basically used to choose 1 to 10 pixels. Okay, आप देख सकते हैं. We set the image tag border attribute to the width of the border in pixel. If you want the border to be 7 pixel, okay, in width, set this attribute to 7. इसका मतलब कि अगर आप बॉर्डर को 7 पिक्सल्स में रखना चाहते हैं, मतलब कि वो जो गैप रहता है ना पिक्सल, बेसिकली आप बॉर्डर को भी कलर रख सकते हैं. बॉर्डर का भी एट्रीब्यूट्स रहता है. और आप लोग देखना, आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को समझ आएगा कि आप लोग बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन you. Okay, so if you, okay, now this is, let's see the node. Okay, if you don't want a browser to draw a border around an image, set the border attribute to 0. Okay, some border, okay, some browser, various browser. Okay, some browser. Okay, basically opera में आप देख सकते हैं. आप opera डाउनलोड करके देखना कि ब्राउज़र में उसमें एक प्रॉब्लम है कि उस इमेज हमेशा बॉर्डर में दिखाता है. So basically, programmer used to set the border attribute to 0 or define border attribute in it. So let's see how this works. Okay, let's move to our editor. Okay, let's move to our editor. Okay, here's the editor. Okay, okay, this is the framing an image with border. Okay, now let's see, this is the image one. I have taken image one, image one. Okay, let's see. I have given border. हम border में इसको zero दिया है. Border zero से होने से क्या होता है? Border 5 देने से क्या होता है? Border 12 देने से क्या होता है? Let's see. Okay, this is part 5.5. Okay, let's open 5.5. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर इंक्रीज हो रहा है. देखिए ये बॉर्डर जीरो है, इसका नो बॉर्डर. लेट मी जूम मोर फॉर क्लैरिटी. यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में बॉर्डर नहीं है. राइट, यहाँ पे बॉर्डर है, दैट इज 5 पिक्सल आई हैव गिवन. एंड यहाँ पे कितना पिक्सल दिया था मैंने? 12 मिनट. अगर इसको 13 ले तो क्या आता है? देखिए, लेट्स सी 13. लेट्स गिव 20. व्हाई नॉट? Yes, 20 also it occur because some of the browser it allows, right? What, let us give 9. 89. Okay, let's give 89. Does it work? Yes, it does work. You see, ये जो फ्रेम में लगाता है, फ्रेम का डिजाइनिंग हो गया इसी के तरह. इट डिपेंड अपॉन यू, राइट? डिजाइनिंग आप जैसे तरह डिजाइनिंग कर सकते हैं, पर HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रक्चर आप लोग मेंटेन कर सकते हैं ना, इसलिए द मेंटेनिंग विल बी लाइक बाय डिफॉल्ट आप लोग रखना 12. ओके, 12, 10 to 12. ओके, दिस विल लुक बेटर. ओके, यू कैन यूज 5. इट डिपेंड अपॉन यू. आप लोग जो मर्जी कर सकते हैं. आप लोग मैनिपुलेट, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. आप लोग का वेबसाइट है, आप लोग एनीथिंग आप लोग जो मर्जी कर सकते हैं आप करिए. देयर इज नो रॉन्ग थिंग अबाउट it. Okay, practice make you better. Okay, now let's move on to our next point, that will be our creating graphical links. Now let's understand graphical links. I have talked about graphical links in the part 3 of our video. Graphical links, in those videos I have talked about like how we can create those hyperlinks, hypermedia. So basically it's a combination of those, right? So now let's understand how those work, because on that video I have not explained it much clearly. Now I'll explain it here. Okay, you can see here, by placing an image tag inside another anchor tag, we can create clickable images. That is clickable images, which can substitute for the descriptive text in a link. Yes, अब जो descriptive text है, जैसे कि आप because एक quote है ना, the image is a picture is 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, मतलब एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होता है. तो बेसिकली एक पिक्चर से आप अपना लिंक बना सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल रहता है कि जैसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं AHREF. ये आप लोग को पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ये एंकर टैग है, HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस इक्वल टू रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंस. आई हैव यूज्ड हियर एब्सोल्यूट रेफरेंस. या फिर आप रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट करके आप खुद का वेब पेज बना के आप लोग उसको कॉल कर सकते हैं. सो दिस इज द इमेज सोर्स, दिस इज द लोगो डॉट png, ऑल्ट देन क्लिक, राइट? और इधर में logo डॉट png, आई हैव नॉट सेव दिस, राइट? You can see हमको जो याद आ रहा है हम सेव नहीं किया, but let's see. Okay, let's see what will happen, right? Now example 2, text inside the anchor container.
href http. This is the fake company. This is just a random URL that I've copied. Then image logo.png. This is the simple syntax. Okay, this is the simple syntax that I have been considering. Okay, now let's see. Let's move to our editor and understand that. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द सिंपल क्लिकेबल ग्राफिक लिंक. ओके, सिंपल क्लिकेबल ग्राफिक लिंक. मैंने ये सिंपल क्लिकेबल ग्राफिक लिंक क्रिएट किया है. आप देख सकते हैं कि HR इमेज सोर्स. ओके, दिस इज द anchor tag, this is the hypertext reference, this is the absolute reference, and this is the image source, and which is this the image URL inside the anchor tag. Now another is the text inside the anchor container, that is ahref http.britannica.com. This is simple. Okay, let's see. This is the image source, and this is the inside the anchor tag. If you click on this, also it is entered through the link that is given, that is britannica.com. Now let's run this program. लो इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है. 5.6 इसी है, सिंपल क्लिकल ग्राफिकल. इसका नो टेक्स्ट, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होगा, लेट्स फाइंड. अगर इसको हम क्लिक करें तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आ जाता है, britannica.com में आ जाता है. यू सी है britannica.com. अगर इसको हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट एंकर टैग, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग. अगर हम इसको क्लिक करें तो क्या होता है, बेसिकली britannica.com में आ जाता है. और अगर इस टेक्स्ट को हम लोग क्लिक करें तो क्या होगा, सेम अगेन britannica.com. तो बेसिकली हम लोग वर्ड डिफाइन करके इस लोगो में अगर हम ब्रिटानिका का लोगो दें तो बेसिकली ये आदमी मतलब यूजर्स लोग उसको क्लिक करने में मजबूर हो जाते हैं. मतलब मजबूर नहीं कि मतलब इंटरेस्ट हो जाते हैं. दैट्स इट, राइट. तो ग्राफिकल लिंक्स के बारे में आप लोग को भी समझ आ चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी. Okay, then we have come to our questions and exercise. So it means that we are to our end of our video. Let's see what are the questions and exercises that I have inserted. चलो देखते हैं. So the first question that I have inserted is, what's the single most efficient concern in creating graphics for display on the web page? ये देखिए, creating graphics for display on the web page. मतलब कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग को जो कंसर्न में रखना है, जो दिमाग में रखना है कि अगर हम लोग ग्राफिक्स को इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी क्रिएट करके हम लोग ग्राफिक्स को इंसर्ट करते हैं, वो कौन से फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उसका क्वालिटी बेटर हो या उसका डाउनलोड स्पीड बेटर हो, ये आप पे डिपेंड करता है. तो यू आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ फर्स्ट, एंड यू कैन इवन आंसर दिस ऑन माय कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. Okay, number 2 is like, when used with the image tag, what sort of command or HTML element is src? Now src is what sort of command or HTML element is src? Now you reply them. You understand what is src, right? So what is the purpose of alt attribute? Okay, we know that what's the purpose. True or false? Okay, the image tag automatically insert a carriage return after displaying graphic. Carriage returns mean break. Okay, that is break. Okay, break line tag. Break line tag is also known as carriage return. So does it return? Do check it out. Do practice among yourself and see them. Now the fifth one is why do you never have to set the align attribute to bottom? Yes, why do you need it? Because I have already mentioned that by default the align attribute to bottom is already in the text is already in the baseline of the image, so we don't need to set the align attribute to bottom, right? That's it. So number 6 question is, what might the following link be used for and is considered legal? Is this construct legal? You have to answer this. Okay, ahref photo.gif image src equal to second photo.gif. To answer this question, if this is true or false, just simple. Now moving on to our exercises. So हम लोग exercise 1 पे देखेंगे. Use the align attribute to an image tag to align another image to the top of the first image. Okay, play with this feature, aligning images to top, middle and bottom. Okay, number 2 is like creating a horizontal graphical menu bar with clickable graphical links. ग्राफिक्स लिंक. ओके, इसमें मतलब कि एक मेनू बार बनाई, जैसे कि अबाउट अस रख लिए, वो जैसे कि एडमिशन रख लिए, कॉन्टैक्ट अस रख लिए, होम रख लिए. इसको मतलब कि एक इमेज बना के उसको ग्राफिकल लिंक में डाल के और एक नया पेज में रिडायरेक्ट करिए. मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राफिकल मेनू बार. ये एक प्रैक्टिस रहेगा आप लोग को वेब पेज क्रिएट करने के लिए, राइट.
तो नंबर 3 इज लाइक यूजिंग DL टैग। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस पार्ट्स में बताया था DL टैग क्या होता है। डेफिनेशन लिस्ट create a thumbnails page of graphics for a catalog। for instance हम लोग catalog जैसे कि बनाएंगे। when a user click one of the thumbnail graphics, take them to the product page with a larger graphic and a description of the product। also place a graphical button or arrow on the product page that lets them click to get to the thumbnail view। देखिए इधर में आप लोग को 3 काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना है, थंबनेल बनाना है, थंबनेल बनाने का। सेकंड टेक देम टू द प्रोडक्ट पेज, इसको हम लोग लिंक करना है विथ लार्जर, अगर इसको डिस्क्रिप्शन भी देना है। इसके बाद एंड प्लेस ए ग्राफिकल बटन भी डालना है या फिर एरो, आप लोग का मर्जी। देन प्रोडक्ट पेज दैट लेट्स देम टू क्लिक टू द थंबनेल व्यू, फिर से डायरेक्टली टू आवर थंबनेल व्यू को रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली ये आप लोग का एक्सरसाइज रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को समझ आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू। I know this video goes very long, but this is the most important part of our video. I think you should understand this part, and if you understand it, do like, share, and subscribe over this video. And also, thank you for tuning up in this video. I think you will continue this journey with me. तो without any delay, तो next part में हम लोग सीखेंगे creating tables. Okay, we will talk about how we can create tables. तो हम लोग कल मिलते हैं, तो you will see how we'll create tables. So see you tomorrow. Have a nice day and bye bye.